kids, welcome back. Now look at your screen. What is happening here? So you can see these animals are running and they are in a hurry to go somewhere. Now I wonder where they want to go. Well, they want to go to a circus. Okay, let us visit that circus. Okay, see where we are here. We are here in a circus. See who is there in front of you? This is Mr. Joker. He is waving hand at us. So we have seen now that animal, those were running here. तो वो लोग किधर आ रहे थे? They were coming to this circus. है ना? See, Mr. Joker is performing his act here. What is happening here? Mr. Joker is performing his. Okay, now after this circus scene, let us back to our study. So we were doing the chapter. Which chapter we are right now? Which chapter is going on? Measurement of weight. Chapter number 9. Measurement of weight is going on. Okay. Now up to now what we have learned in this chapter so far. So up to now we have seen several things such that one such thing is what is lighter and what is heavier. This thing we have done. There we have took several examples that this thing is heavier, this thing is lighter and things like that. Okay. Okay, now today we will start the important concept of conversion. Today we will start the important concept of conversion. Okay. Let us see. Measurement of weight. This chapter we have started and we have find out that several things they are lighter in weight. Some things are there that are heavier in weight. Things like that. Now today we have to start the concept of conversion. Okay. Today we will start conversion. Now what is here in conversion? Conversion means converting the one unit into other, like converting the gram into kilogram or kilogram into gram. Okay, let us see. चलो अब देखो हमें कल पता चला कि kg and gram there are two units of weight. kg and gram there are two units of weight. वेट के दो यूनिट होते हैं, ठीक है. एंड फिर आगे हमने पढ़ा कि वी यूज केजी फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट. हम केजी किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज केजी फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट. ओके. एंड वी यूज ग्राम फॉर lighter object. kg for heavier object and gram for lighter object. This we have studied so far. Now next what we have to see. देखो अब बात आती है कि भाई kg में कौन कौन सी चीजें हम रख सकते हैं, ग्राम में हम कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं. Let us start with gram now. See, gram we can include gold and pepper, and heavier object में what we can include? brick, rice. अब देखो राइस किसी के भी घर ग्राम्स में नहीं आता. राइस किसी भी बच्चे के घर ग्राम्स में नहीं आता होगा, है ना. मुझे तो नहीं लगता राइस किसी के घर 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम में आता होगा. लेकिन हाँ, हम इस तरह से गोल्ड बाय जरूर करते. गोल्ड हम ऐसे 10 ग्राम्स एंड 8 ग्राम्स इस तरह करके हम गोल्ड तो खरीदते हैं. बट हम क्या नहीं खरीदते? हम राइस ग्राम्स में नहीं खरीदते हैं, ठीक है. तो ये तो बात हुई केजी एंड ग्राम की. बट हमें तो पढ़ना है
आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कन्वर्जन, ठीक है। तो लेट अस सी। ओके, वी हैव टू सी द कन्वर्जन, है ना। नाउ सो द क्वेश्चन अराइजेस, what is the relation between kilogram? What is the relation between kilogram and gram? Okay, so question arises, what is the relation between kilogram and gram? Now 1 kilogram is equals to 1000 gram. 1 kilogram is equals to 1000 gram. Now, if 1 kilogram is equals to 1000 gram, तो suppose करो, now if I'm having a half kg weight, अगर मेरे पास 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स का वेट है, तो मुझे कितने वेट चाहिए होंगे 1000 ग्राम बनाने के लिए? 500 ग्राम का वन वेट आई एम हैविंग. Now how many more weight do I require to make 500 grams? Let us see. See, I'll need 500 plus 500 gram. 500 gram plus 500 gram. And this is equals to 1000 gram. We have seen this earlier also, है ना, ये हमने आगे भी पहले भी देखा है. Now, see, 500 plus 500 is equals to 1000 gram. Now the question arises, how many 250 grams of weight you will require to make 1000? Chalo, let us simplify this question. If you are having 25 rupees, okay, so how many times do you require 25 rupees to make 100 rupees? Think about that. Till then, let us do this question. So next I am having a weight of 250 grams. Next I am having a weight of 250 grams. तो अब क्या हुआ भाई? I am having here 250 gram. Now 250 gram, how many times do I add 250 gram to make it 1000? Yes? How many times do I need 250 gram? Let us think about it. Tell me. Okay. So 250 gram plus 250 gram plus 250 gram and plus 250 gram. Now 250, 250, 250, 250, lots of 250. इतना सारा ऐड करके what we will get? We will get 1000 gram. Okay, you will get 1000 gram. 500 plus 500 is 1000 gram. Then 250, how many times you will add? 4 times. Let us prove this. अच्छा ठीक है, चलो let us recall something. Let us recall multiplication. Yes, multiplication, because what we are doing here is, we are doing here repeated addition. So repeated addition is equals to multiplication. Repeated addition is equals to what? Repeated addition is equals to multiplication. Okay. Now see, अब हमने क्या किया? 250, 250, 250, 250, 4 times we have used. चलो करके देखते हैं. तो दैट मीन्स अगर मैं करूं 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4. चलो कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन. 250 मल्टीप्लाई बाय 4, अवॉइड ग्राम, जस्ट सॉल्व. 250 मल्टीप्लाई बाय 4, बस आप इतना करें. 250 मल्टीप्लाई बाय 4, कम ऑन. Okay, so let us do 4 zeros are 0, 5 4s are 20, 4 2s are 8, 1, carry 1000. See what we have got here? 1000. We have got here 1000 as our
answer. So that means 250 gram, how many time you will add? 4 time. अच्छा देखो, that means अगर हम एक तराजू, अगर हम एक बैलेंस का यूज करें, तो अगर मुझे 1000, अच्छा one side I am having 1 kg and one side I am having 25 gram. Now other side 25 ग्राम में कितने मुझे रखने होंगे? 250 ग्राम, 25 नहीं 250, कितने रखने होंगे? 250, 250, 250, 250, 4 टाइम्स. ठीक है. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन. तो हमें पता चला, हमें क्या पता चला? दैट यस 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 kilogram is equals to 1000 gram and 500 gram plus 500 gram is equals to 1000 gram. Next 250 gram, 250 gram, 250 gram and 250 gram is equals to 1000 gram. This much we have learned so far. Okay, let us move ahead. अच्छा चलो भाई अब आगे पढ़े. ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन. हमें पता चला क्या पता चला? हाँ, हमें पता चला दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. नो देखो, ये कुछ जाना पहचाना सा कंसेप्ट नहीं लग रहा है. इससे हमें क्या कुछ याद नहीं आ रहा है? क्या हमें इससे कुछ याद आ रहा है? हाँ, क्या हमें इससे ये याद आ रहा है कि सिमिलरली जैसे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, उसी तरह पिछले चैप्टर में वी हैव लर्न that 1 kilometer equals to 1000 meter, है ना? We have learned that ना. That means 1 kg is equal to 1000 gram. 1 kilometer is equals to 1000 meter. Now this is used for weight. Okay, and this is used for length. Okay, 1 kg equals to 1000 gram. The first one, 1 kg is equals to 1000 gram. Used for weight. 1 kilometer equals to 1000 gram is used for length. Okay. Okay, okay. Now see, this much we have done. Let us move ahead. If 1 kg equals to 1000 gram, then use your brain and tell me 2 kg is equals to, if 1 kg is equals to 1000 gram, then 2 kg is equals to, tell me 1 kg. See, 1 kg is equals to 1000 gram, then 2 kg equals to 2000 gram. Now you will ask, ma'am, how? So, see, 1 kg में अगर हमें देखो, ये भी बात मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में बताई, फिर मनी में भी बताई, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में भी बताई. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ 1 का इज गिवन, 1 kg में कितने ग्राम इज गिवन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 2 kg. सो 1 का दिया है और हमें मैनी का, दैट मीन्स 2 का बताना है. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मल्टीप्लाई. सो 2 into 1000, 2 into 1000. ठीक है, 2 into 1000 means 2 into 1000 you will get 2000 gram. Now 3 kg, if I am having 3 kg, so what will be the answer if I am having here 3 kg? Then what will be the answer? 3 kg equals to 1 kg equals to 1000 gram, 2 kg is equals to 2000 gram. Now 3 kg is equals to 3 into 1000 gram, and this is equals to 3000 gram. Okay, got it? Okay. Now some question for you, my dear.
Let us do some question. Now the next question that I am going to give will be solved by you. So the next question is 4 kg, 5 kg and 6 kg. Now come on, convert them into gram. Solve this question yourself. Convert this into grams. Okay, do this. Completed? Okay, let us see. So you have to convert 4 kg. ठीक है, आपने क्या convert करना है? You have to convert the 4 kg. चलो देखें how we can convert 4 kg. Now 4 kg you have to convert. Okay. So 1 kg equals to 1000 gram. Now 4 kg is equals to 4 into 1000 gram. And together we will get 4000 gram. Next is 5 kg. Next we are having 5 kg. Now 5 kg में कितना? 5 into 1000 gram and together it will make 5000 gram. Okay. Next 6 kg. So 6 into 1000 gram is equals to 6000 gram. Okay, got it? Chalo, come on, note it down. Come on, note down. Okay, great. Completed? Okay, so let us move toward the next topic. Now here we have done the conversion. Now let us do this conversion in a step-by-step manner. Okay, so I am going to clean the board now. So what you have to do, you have to convert the following into gram. Question is convert into gram. Okay, so the question is 8 kg. Okay, convert this 8 kg into gram. Come on. Convert this 8 kg into gram. Let us do 8 kg. So first line that we will write here is 1 kg is equals to 1000 gram. 1 kg is equals to 1000 gram. Okay. 8 kg is equals to 8 into 1000 gram. 8 into 1000 gram. And together they will form
8000 ग्राम. ओके, सो 8 kg इज इक्वल्स टू 8000 ग्राम. कैसे किया? सबसे पहले देखो, फर्स्ट लाइन विल रिमेन द सेम. फर्स्ट लाइन will remain the same, that states that 1 kg equals to 1000 gram. ठीक है, 1 kg is equals to 1000 gram. That first line will remain the same. Now, अच्छा, now next 8 kg equals to 8 into 1000 gram. That we have to write. Now when we will multiply 8 in 1000, let us see. 1000 multiply with 8. So we have studied this, that whenever we will multiply any number with 0, the answer that we will get will be in what? Will be 0. So 8 multiplied by 0 is 0, 8 multiplied by 0 is 0, 8 multiplied by 0 is 0, 8 ones are 8. So our answer is 8000. Our answer is what? 8000. Got it? So that's why we have got here 8000 as our answer. Achha, also I have explained this to you that whenever we have to multiply any number with a multiple of 10, so what happened? 8 ones are 8, and जितने 0 इधर हमें दिख रहे हैं that we will include. Now what happened? This has become 8000. ये कितना हुआ? 8000. Got it? Okay. Moving ahead. Now, let us move toward the next question. And the next question that we are having here is 4 kg. Next question is what? 4 kg. Now convert 4 kg. Come on. Convert 4 kg. 4 kg into grams. Come on, do it. Completed. This question is very easy. Come on. Same type of question you have done in kilometer and meter also. है ना? In measurement of length also you have done the same type of question. Come on, complete it. Fine. Let us see. So the first line will remain the same. First line will be 1 kg is equals to 1000 gram. 1 kg में कितना? 1000 gram. Okay. Now 4 kg is equals to 4 into 1000 gram. ठीक है? 4 into 1000 gram. Now, what is the next thing that we have to write? अच्छा, 4 into 1000 gram, that is equals to 4000 gram. Now one more thing. चलो एक चीज मुझे बताओ. I'm going to list some of the objects here. Okay, so I have listed several objects here. These are pepper, potatoes, raisin, sugar.
ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखे बोर्ड पे, पेपर, पोटैटोज, रेजिन एंड शुगर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू. अच्छा मुझे बताओ, आपके घर में 4 kg इनमें से कौन कौन सी चीज आती है? पेपर आता है, पोटैटो आता है, रेजिन आता है या शुगर? काली मिर्च, आलू, किशमिश या चीनी. ठीक है, आपके घर 4 kg इनमें से क्या आएगा? पेपर आएगा, पोटैटोज आएंगे. अच्छा, इधर पेपर मतलब ये पेपर मीन्स ये पेजेस वाला पेपर नहीं, पेपर मीन्स काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर जिसको हम बोलते हैं ना. तो क्या आएगा? टेल मी. चलो बताओ, क्या हमारे घर में पेपर आता है 4 kg? इतनी मिर्ची तो हम नहीं खाते हैं ना, इतनी मिर्ची हम नहीं खाते हैं ना, तो 4 kg पेपर हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू विथ 4 kg ऑफ पेपर? नाउ सी, तो पेपर हमारे घर 4 kg नहीं आता है. क्या हमारे घर 4 kg पोटैटोज आते हैं? टेल मी, क्या पोटैटोज 4 kg हमारे घर में आते हैं? यस, आते हैं. यस, पोटैटोज क्योंकि हमें बहुत पसंद है. पोटैटो से हम क्या क्या बना के खाते हैं? पोटैटो करी हम खाते हैं, देन पोटैटो पराठा हम खाते हैं. तो दैट्स व्हाई पोटैटो तो आता है 4 kg, तो इसलिए पोटैटो हम यूज अमाउंट में लेते हैं 4 kg. दैट्स व्हाई पोटैटो हम 4 kg लेते हैं, या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, बट 4 kg हम लेते हैं. नेक्स्ट इज रेजिन्स. रेजिन्स मीन्स व्हाट? किशमिश. टेल मी, क्या किशमिश 4 kg आता है किसी के घर? पूछ के बताओ मम्मा से. आई एम वेटिंग. चलो बताओ. रेजिन नहीं आता है हमारे घर 4 kg, है ना. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर बताओ, क्या शुगर आता है 4 kg हमारे घर? मुझे तो पता नहीं. यस, शुगर हमारे घर आता है 4 kg, है ना. तो दैट्स व्हाई पेपर एंड रेजिन हम कैसे लेते हैं? हम इन्हें कम अमाउंट में लेते हैं. हम इन्हें इतना ज्यादा 4 kg हम नहीं लेते हैं. हम इन्हें कितना लेते हैं? कम कम सा अमाउंट लेते हैं, है ना. अच्छा, अनटिल अनलेस किसी का बिजनेस ना हो, किसी का रेस्टोरेंट ना हो, तो कम कम लेते हैं. ठीक है, घर के यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए हम कम यूज करते हैं. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 9 kg. 9 kg. Now convert 9 kg into gram. Come on. बताओ बताओ, 9 kg को कन्वर्ट करो. Now 9 kg, 1 kg is equals to 1000 gram. ठीक है, फर्स्ट लाइन will remain the same. Now 9 kg is equals to 9 into 1000 gram. 9 kg is equals to what? 9 into 1000 gram. 9 into 1000 ग्राम. ठीक है, 9 into 1000 ग्राम हो गया. Now 9 into 1000 ग्राम means 9000 ग्राम, है ना. 9000 ग्राम. ठीक है, तो हमने क्या किया? देखो, हाउ वी विल कन्वर्ट. सबसे पहले वी विल राइट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देन 9 kg इक्वल्स टू 9 into 1000 ग्राम. 1 kg का हमें पता है, हमें मैनी का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, 1 kg का वी आर ऑलरेडी हैविंग, 9 kg का दे आर आस्किंग, तो 9 into 1000. 9 into 1000 means what? 9000. 9 into 1000 means
9,000. 9,000 gram. Okay, got it? Okay, now so this is how we will convert grams. This is how we will convert kilogram into grams. Okay, now so kids, we will meet in our next class with more exciting content. Okay, I will wait for you. Chalo, bye bye.